Diligent Odia. Hello students, I am Akriti, your English faculty at Diligent Odia. तो मु आशा करुँच आपण मैंने भलसे प्रिपेयर होथिबे एग्जामिनेशंस पाई जोटा कि पाखे आसलानी एंड या पूर्वरु आमे CGL 2024 मेंस रो पेपर इंग्लिश पेपर सॉल्व करितलो एंड आज ही आमे OPSC ASO 2022 रो इंग्लिश पेपर सॉल्व करिबा ओके तो केमिति कौन अप्रोच रहइबो मु अपन मन को इनसाइट्स देबी एंड अपन माने ट्राई करिबे से अप्रोच को अप्लाई करबा पे एग्जाम्स रे राइट तो चलंतु देखिबा क्वेश्चंस ओके तो चारिटा अपन को वर्ड्स देछि जो थिरे कि दीटा वर्ड्स either they have similar meaning or they are opposite in meaning okay तो तुमको सेमिति दीटा words find out करिवार अछि mark करिवार अछि जोटा कि either they mean the same or mean the opposite okay तो चलंतु देखिबा गोटे गोटे words आमे बुझिबा okay तो the first one जो देखो the first word is jeopardize okay jeopardize okay तो एटा कौन एटा गोटे verb jeopardize is a verb okay and the meaning कौन the meaning होची to do something that may damage something or put it at risk okay एमिति किछि करिबा okay this is a verb तो the meaning होची एमिति किछि काम करिबा जोटा कि किसी जिनस को डैमेज करी पारुथिबो ओके इट हैज द टेंडेंसी टू डैमेज समथिंग और पुटिंग दैट थिंग एट रिस्क ओके तो फॉर एग्जांपल ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जेपर्डाइज हिज करियर से एमिति केबे भी किछि भी एमिति काम करिबो नाही जो थिरे कि तारो करियरटा रिस्क रे आसो ओके लाइक से केबे भी निज कैरियर को रिस्क रे पकेबो नहीं बुझियला दैट इज jeopardize ओके नेक्स्ट वर्ड कोन अछि repudiate okay repudiate this is also a verb okay this is also a verb repudiate and taro meaning कोन to say that you refuse to accept or believe something माने तमे किछि जिनस उपरे जदि तमे बिलीव करूना हो या फिर सेही जिनसटा को एक्सेप्ट करूना हो ओके एक्सेप्ट करूना हो टू नॉट एक्सेप्ट समथिंग और टू नॉट बिलीव समथिंग दैट इज रिप्यूडिएट फॉर एग्जांपल टू रिप्यूडिएट अ सजेशन और एन accusation ओके जदि तमे सपोज मु तुमको गोटे सजेशन देली तमे जदि सेटा एक्सेप्ट करिवो नाही तमे बिलीव करिवो नाही तो that means you repudiate a suggestion you repudiated my suggestion okay बुझियला नेक्स्ट आमे देखिबा कंफ्यूज समस्त जानछंती when you are not sure of something किछि जिंसो रे तमरो कॉन्फिडेंस नाही लाइक श्योर ना हो कि ओके ट्रू या फिर नु हो सत्य कि मिछ तो सेमिति कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग दैट एंड द लास्ट वन इज disown okay disown which is also a verb and तारो मीनिंग कोन तारो मीनिंग होची to say that you no longer want to be connected with or responsible for somebody or something okay माने तमे कौन कोंती किछि जिंसो को किंबा को किछि लाइक इफ जणे पर्सन अछंती तमे तांको एक्सेप्ट करू ना हो ओके एंड तमे लाइक कनेक्शन रखिबा पई चाहू ना हो तो एक्सेप्ट करू ना हो तांको किछि जिंस होई पारे किंबा कि पर्सन होई पारंती है ना तो यू नो लॉन्गर वांट टू बी कनेक्टेड विथ अ थिंग और अ पर्सन बुझिला यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द थिंग और दैट पर्सन गॉट इट तो तम मानकु फॉर एग्जांपल अच्छा यार डिसऑन रो एग्जांपल
जदि देखिबा ताले when he was arrested his family disowned him. जेतेले ताकू क्राइम पाई लाइक से अरेस्ट हे गला सेतेले ता फैमिली माने ताकू एक्सेप्ट ता फैमिली मेंबर्स ताकू एक्सेप्ट करिले नाही बुझियला नाउ तो कोटा सिमिलर लागुची तुमको ऑपोजिट अच्छा ऑपोजिट किछि अछि कि ऑपोजिट माने दीटा कंट्रास्टिंग मीनिंग रो किछि अछंती कि समस्त लाइक देखो जियोपेडाइज कौन जियोपेडाइज होची किछि एमिति काम करबा जोटारे कि तम लाइक जोटारे कि तमे किछि जिंस को डैमेज करि दबो ओके देन कंफ्यूज कंफ्यूज एकदम अलगा मीनिंग जियोपेडाइज एकदम अलगा मीनिंग है ना देन रिप्यूडिएट रिप्यूडिएट माने कौन कि तमे किसी जिनस को एक्सेप्ट करू ना हो कि बिलीव करू ना हो एंड डिसओन डिसओन माने भी कि कौन कहली कि किसी जिनस को यू नो लॉन्गर वांट टू बी कनेक्टेड विथ समथिंग और समवन माने एक्सेप्ट करू करिबा पई चाहून तो दीज टू हैव सिमिलर मीनिंग्स बुझी होची repudiate and disown have similar meaning but ए चारिटा वर्ड भितरो कौनसी दीटा वर्ड्स रो ऑपोजिट मीनिंग नहीं नी बट सिमिलर मीनिंग अच्छी तो तुमको कौन पचारछि या तो सिमिलर पचारछि या तो ऑपोजिट पचारछि तो एठी तुमको सिमिलैरिटी मार्क करि पारुछ है ना तो आंसर कौन हबो number 2 and which is repudiate and number 4 which is disown so 2 and 4 option number 2 and 4 option number C got it jeopardize बुझियला repudiate बुझियला confuse कहिछि and disown okay बुझियला next देखो Nafisa is afraid blank spiders. Nafisa is afraid of spiders. I am afraid of her. Okay, so afraid परे सब बेले को preposition टा लगे afraid परे सब बेले of लगे बुझियला next I am worried about the examination. I am worried about the examination. Okay, next देखो he looks upset. I think he took the criticism blank heart. माने कौन सी अपसेट दिसुची मतलब उची सी क्रिटिसिज्म डा माने कोनती ना कि दिल पे मत लो या दिल पे ले लिया तो सेमिति कि माने I think he took the criticism blank heart तो correct preposition कौन हबो to heart. Okay, he looks upset. I think he took the criticism to heart. Okay, criticism to heart. Okay, now I am envious blank them. I am envious blank them. Now envious सह सबु बेले off लागे. Envious is always followed by off. Envious is always followed by off. Envious माने कौन envious माने होची like wanting something that somebody else has. Okay, जदि तुम पाखरे कार अच्छी तो I am envious of you कहना मते तमरो कारटा नबारो इच्छा अछि तम भली कार नबा पे इच्छा अछि तम पाखरे जो कारटा अछि मते सेटा नंबर अछि तो I am envious of you. Okay, right, तो next he confided blank me. He confided blank me. Okay, now confide अच्छा option कौन अच्छी about, in, on and off. Okay, तो देखो confide जो like this is the verb. Wait, confided is the V2 form of confide. Okay, तो confide गोटे verb and confide माने कौन like देखो confide रो दीटा टाइप रो यूज हे परिबो confide in and confide to बुझियला confide in यूज हुए and confide
टू यूज हुए. नाउ कन्फाइड इन कौन मीन करे एंड कन्फाइड टू कौन मीन करे चलतु देखिबा. ओके कौन कहली मु कौन कहली कन्फाइड इन एंड कन्फाइड टू. ओके कन्फाइड इन एंड कन्फाइड टू बुझीगला. तो कन्फाइड इन टा केते बेले हुए एंड कन्फाइड टू टा केते बेले हुए चलंतु बुझिबा टिके. ओके तो देखो कन्फाइड इन माने होची टू ट्रस्ट समवन विथ सीक्रेट्स. जदि तमे का ऊपर भरोसा करूछ सीक्रेट्स सह. ओके लाइक तमे भरोसा करि परिबो कि से तम सीक्रेट्स रिवील करिबो नाही. तो दैट इज कन्फाइड इन. And what is confide to? Confide to माने अछि to tell, to actually tell them a specific secret. जो तुम कहूचो actually कहूचो है ना a specific secret काहकु तो that is like confide to होची सेटा. ओके तो गोटे एग्जांपल नबा गोटे कन्फाइड इन रो यूसेज देखो. शी ऑलवेज कन्फाइड्स इन हर सिस्टर. शी ऑलवेज कन्फाइड्स in her sister. Okay तो confide in कौन कही to trust someone with secrets माने से ता भौणी उपरे बहुत भरोसा करे. तो आमे कहबा she always confides in her sister. Okay I always confide in my best friend. Okay सेमिति and then confide to जदि हेई थांता एठी जदि टू ऑप्शन थांता ताले सेटा कौन मीन करी थांता. सपोज आई विल से आई डू नॉट हैव एनीवन टू कन्फाइड. ना एटा तो कन्फाइड इन हे गला ना. नाउ कन्फाइड टू जदि हमें देखिबा एग्जांपल तो देखो सपोज हमें कहबा कि ही कन्फाइडेड हिज सीक्रेट्स टू हिज ब्रदर. ओके ही कन्फाइडेड हिज सीक्रेट्स टू हिज ब्रदर माने से तार सीक्रेट्स गुड़ा ता ब्रदर सह शेयर करेला. बुझीगला. कन्फाइड इन माने तमे जस्ट ट्रस्ट करूछ का ऊपरे विथ योर सीक्रेट्स एंड कन्फाइड टू माने तमे एक्चुअली जाइकी कहूछ तमे तांकू सीक्रेट्स तमर. बुझीगला. नाउ एठी तमे कौन बुझी पारछ ही कन्फाइडेड ब्लैंक मी. ही कन्फाइडेड ब्लैंक मी. तो एठी हबो ही कन्फाइडेड इन मी. से मो ऊपर भरोसा करे. ओके कि मु ता सीक्रेट्स काकू कहबी नाही. बुझियला. तो एठी कौन हबो ही कन्फाइडेड इन मी. ओके नाउ नेक्स्ट they decided blank the grey sofa. They decided blank the grey sofa. They decided on the blank sofa. ओके जिते बेले भी तमे डिसाइड लाइक यार मीनिंग कौन यार मीनिंग होची तमे गोटे स्पेसिफिक जिनस विषय रे श्योर अच्छो एंड डिसाइड करिछो कि लाइक एटा तमे लाइक गोटे जिनस विषय रे एकदम श्योर अच्छो. तो दैट इज व्हेन यू से that is when you decide on something. Okay जेते तमे गोटे जिनस ऊपर श्योर अच्छो एंड तमे डिसाइड करूछ कि एटा ही नबो कि से जिनसटा ही जा करिवो से करिवो. तो you decide on that thing. तो they decided on the grey sofa माने से माने श्योर अछंती कि सेमानंकु से ग्रे सोफाटा ही दरकार. बुझियला. तो एठी कौन हबो they decided on the grey sofa. Okay now next. Okay she suffers blank a heart disease. She suffers blank a heart disease. She suffers from a heart disease. Got it? She suffers from a heart disease. Okay you suffer from a disease, not about, not in, not on. You always suffer from. Suffer सह सबबेले from ase. Okay now the teacher set some homework blank the end of the session. Okay the teacher set
blank some homework blank the end of the session. The teacher said some homework at the end of the session. Okay, at the end of the session. at कौन पाई काइना गोटे स्पेसिफिक टाइम विषय रे कथा होची है ना, जितले लेसन सरी गला है ना बुझा होची सेंटेंस रे एट द एंड ऑफ द लेसन कहूची, तो सेत पई जेतु स्पेसिफिक टाइमिंग मेंशनड अछि सेत पई at. ओके, नाउ I am good blank tennis. I am good at tennis. Okay, जितेबेले भी skills abilities विषय रे कोहा होची, like I am good at English, you are good at mathematics. Got it? तो जितेबेले भी skills specific skills abilities विषय रे कथा हुए सेतेबेले सब बेले at आसे. Okay, now we arrived blank the station an hour late. Specific जगह विषय रे कथा होची तो at. Okay, we arrived at the station an hour late. Okay, now they usually spend their holidays blank mountains. They usually spend their holidays holidays in blank mountains. Okay, तो कौन हबो the no article a किंबा n. Okay, तो कौन हबो को they usually spend their holidays in the mountains. Why the mountains? Why the mountains? काइना the कौन देखो the होची a definite article. The होची a definite article. ओके, द होची गोटे डेफिनाइट आर्टिकल. तो द केते बेले यूज हुए, द केते बेले यूज हुए जेते बेले तमे गोटे लाइक किछि स्पेसिफिक जिंस विषय रे कथा होछ. ओके, स्पेसिफिक लाइक स्पेसिफाई करिकि तमे कहूछ जेते बेले, दैट इज व्हाई इट इज अ डेफिनाइट आर्टिकल. ओके, and एठी कौन पे द यूज हिची काइना देखो दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलिडेज इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स रे भी से माने गोटे स्पेसिफिक जगह रे ना, यू कैन नॉट टेल अबाउट द एंटायर माउंटेन है ना. सबू लाइक माउंटेन बहुत बड़ हुए है कि नहीं, माउंटेन बहुत बड़ हुए तो से माने गोटे स्पेसिफिक जगह रे तांकर लाइक स्पॉट थिबो ना, सेठी से माने तांकर हॉलिडे स्पेंड करंती. तो इन द माउंटेन्स इन दैट सेंस. गॉट इट? तो इन कौन हबो इन द माउंटेन्स. ओके, इन द माउंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि, लॉस एंजल्स हैज blank ideal climate. Okay, now एठी कौन हबो, लॉस एंजल्स हैज an ideal climate. Why? Because of the vowel sound. Ideal जेतु vowel sound तो एठी an हबो. बुझियला, एठी an हबो. Next, this is blank worst Mexican restaurant in the country. This is blank worst Mexican restaurant in the country. Okay, तो एठी कौन हबो, जेतु देखो वर्स्ट अच्छी. ओके, वर्स्ट माने सुपरलेटिव डिग्री अच्छी, वर्स्ट बेस्ट. तो सुपरलेटिव डिग्री पूर्वरु सब बेले द यूज हुए. सुपरलेटिव देखो एठी वेट एठी कौन अच्छी, एठी वर्स्ट पाई द यूज हबो. ओके, सुपरलेटिव डिग्री रे सब बेले द यूज हुए. गॉट इट? नेक्स्ट, I cannot live on blank $500 a month. I cannot live on blank $500 a month. Okay, तो एठी कौन हबो, ए हबो. कौन पाई ए हबो, काहे कि ना देखो गोटे जनरल क्वांटिटी या फिर अमाउंट जदि एक्सप्रेस हेथिबो गोटे न्यूमरल सह जेमति कि 100 या फिर 1000 या फिर मिलियन, ताले सेठी अ आसीबो, ताले सेठी ए आसीबो. बुझियला कौन कहली, जति गोटे जनरल क्वांटिटी या फिर गोटे जनरल अमाउंट किछि भी अमाउंट
एक्सप्रेस हेइथिबो लेखा जाइथिबो गोटे न्यूमेरल सह जेमति कि फॉर एग्जांपल 100,000 या फिर मिलियन सेतिकी बेले ए आसीबो बुझियला ए आसीबो लाइक आई हैव $1,000,000 okay she gave me a 500 rupees note she gave me a 500 rupees note बुझियला तो जनरल अमाउंट आसीची एंड लाइक $500 जेहेतु अच्छी तो से $500 हबो बुझियला आई कैन नॉट लिव ऑन $500 a month okay now yeah someone call blank policeman okay तो एठी कौन हबो द भी हेई पारिबो एंड ए भी हेई पारिबो बट द केते बेले हेई थांता जते बेले पुलिस लिखा ही थांता ओके बट एठी कौन लिखा ही पुलिस मैन नाउ जेहेतु पुलिस मैन लिखा ही इट कुड बी एनी ऑफिसर नो इट कुड बी एनी ऑफिसर लाइक बहुत सारा पुलिस मैन होते ना तो कहा को भी रेफर करि पारो तमे है ना एठी तो किछि मेंशन ही नहीं स्पेसिफिकली कि ए पुलिस मैन या फिर से पुलिस मैन यूनिकनेस नहीं ओके तो जदि एटी पुलिस ही थांता ताले एटी द यूज ही थांता जेहेतु एटी पुलिस नहीं एटी पुलिस मैन को आइछि माने यू कैन रेफर टू एनीवन इन जनरल गॉट इट तो सेथि पई एठी ए हबो बुझियला तो एठी कोन हे जिवो आंसर ए प्लीज someone call a policeman okay someone call a policeman now next देखो someone call blank police एठी कोन हबो द हबो काहे कि काइना पुलिस पाई एठी द हबो ना पुलिस कोन गोटे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ओके गोटे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन विषय तुम कौच रादर देन अ सिंगल इंडिविजुअल बिकॉज सिंगल इंडिविजुअल हेले तुम यूनिकली क्या को रेफर करू ना हो बट व्हेन यू से पुलिस दैट इज अ डिग्निफाइड ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ओके रादर देन अ सिंगल इंडिविजुअल तो सेठी एठी द हबो बुझियला okay next he is blank real American hero he is a blank real American hero तो एठी कोन हबो एठी हबो he is a real American hero कोन पाई कहिना जदि तमे देखो एन तो हबो नहीं नो आर्टिकल मध्य हब नहीं ओके नाउ द कौन पाई हब नहीं देख कहीं ना अच्छा ए कौन पाई होची कहीं ना एमती भी तुम देखि परिबो कि रियल टा कौन कॉन्सोनेंट आर तो रियल पूर्वरु ए ही आसीबो बट लाइक जदि तुम ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को देखिबो तो द कौन पाई हबनी काइना that would imply that the person being regarded is the only hero of America बुझी होची जो पर्सन को तुम रेफर करूछ जे तुम द लगे दउछ द माने कोन गोटे स्पेसिफिक आइडेंटिटी बुझियला द का को इम्प्लाई करिवो अ स्पेसिफिक पर्सन अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी तो सेटा कोन मीन करिवो कि ही इज द ओनली वन लाइक ही इज द ओनली हीरो इन अमेरिका बुझियला तो सेमिति तो किछि कॉन्टेक्स्ट नाही सेंटेंस रो दैट इज व्हाई ही इज अ रियल अमेरिकन हीरो द कोन पई हबनी काइना अलगा भी हीरो ही परंते ना अमेरिका जो गोटे तो हीरो नाही तो सेथि पई बुझियला ओके नेक्स्ट आई डू नॉट लाइक ब्लैंक डॉग्स बट आई लाइक माय ब्रदर्स डॉग नाउ आई डू नॉट लाइक डॉग्स एठी नो आर्टिकल हबो ओके काइना देखो काइना एठी लाइक इन जनरल कुहा होची ओके इन जनरल कुहा होची अच्छा ए एंड द एंड नो आर्टिकल
केतेबेले यूज हुए मु कहि दउछि थरे ओके देखो देखो ए किंबा एन को कौन कहती इनडेफिनाइट आर्टिकल ओके इनडेफिनाइट आर्टिकल ओके एंड द कौन है गला मु कही द होची डेफिनाइट आर्टिकल द होची डेफिनाइट आर्टिकल ओके ए एंड एन होचंती इनडेफिनाइट द होची डेफिनाइट नाउ ए एंड एन केतेबेले आसीबो जेतेबेले तमे लाइक स्पेसिफिक स्पेसिफिक जिनस को तमे रेफर करू ना हो ओके तमे जेतेबेले किछि भी स्पेसिफाई करू न सेतिकी बेले लाइक इनडेफिनाइट ओके स्पेसिफिक जिनस नाही किछि किंबा स्पेसिफिक पर्सन को रेफर करू ना हो सेतेबेले ए किंबा एन आसीबो जेतेबेले तमे स्पेसिफाई करि दउछो है ना तमे जेतेबेले स्पेसिफाई कर दउछो सेतेबेले आसीबो द एंड नो आर्टिकल केतेबेले जेतेबेले तमे like you are referring to things in general when you are referring to things in general सेतेबेले सेठी किछि भी आर्टिकल यूज होबो नाही तो एठी देखो आई डू नॉट लाइक डॉग्स मते डॉग्स इन जनरल मु पसंद करे नाही आई डू नॉट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माय ब्रदर्स डॉग बट आई लाइक माय ब्रदर्स डॉग तो एठी कौन हो एठी नो आर्टिकल बुझीला नाउ नेक्स्ट आई हैवंट सीन हिम इन 5 years एठी मध्य नो आर्टिकल ओके ए सेंटेंस टा मध्य ठीक अछि आई हैवंट सीन हिम इन 5 years बुझीला नाउ एठी जदि तुम कहबो कि ए अ कोन पई हलानी आई हैवंट सीन हिम इन अ 5 years एमिति होए नाही अ केतेबेले आसी एकटी के पूर्व में कहिथि जेतेबेले गोटे जनरल क्वांटिटी किंबा अमाउंट एक्सप्रेस हेतिबो विथ द न्यूमेरल जेमति कि 100,000 million तो सेतिकी बेले लाइक $1 million 1,000 rupees 100 rupees बुझियला सेमिति बट एठी जेतु टाइम को तमे एक्सप्रेस करूछ एंड तो एठी आसीबो नाही एंड इन जनरल कहूछ ओके जेतेले तुम कहूछ $1 million या तुम स्पेसिफाई करि दोछ दैट $1 million 100 रुपी स्पेसिफाई करूछ ना दैट्स व्हाई ओके तो एठी कोन हबो एठी मध्य नो आर्टिकल गॉट इट नाउ नेक्स्ट को ब्रांड इज ब्लैंक बास्केटबॉल प्लेयर ओके तो एठी मध्य कोन हबो इज अ बास्केटबॉल प्लेयर ओके is a basketball player कहीं ना देखो लाइक को ब्रांड इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना डिस्क्राइबिंग एन अ प्रोफेशन और अ कैटेगरी ओके तो सेथि पई एठी द कोन पई हबनी कहीं ना बहुत सारा लाइक बास्केटबॉल बहुत जन खेलती को ब्रांड इज नॉट द ओनली बास्केटबॉल प्लेयर तो जब तुम द लगे था तो दैट वुड मीन कि को ब्रांड इज द ओनली बास्केटबॉल प्लेयर बट बहुत जन खेलते ना बास्केटबॉल देयर आर मेनी बास्केटबॉल प्लेयर्स तो दैट्स व्हाई द हबो नहीं ए हबो को ब्रांड इज अ बास्केटबॉल प्लेयर गॉट इट तो कौन हबो इज a basketball player okay next देखो the fire blanked the huts before the fire brigade came the fire blanked the huts before the fire brigade came एठी देखो कौन होची दीटा actions simultaneously occur होची and past रे occur होची and तो आगो को कामटा हेची आगो लाइक निआरे जली जाइछि घर गुडा तापरे फायर ब्रिगेड आसी तो आगो को कामटा कंप्लीट हिछि जलिबा वाला कामटा कंप्लीट हि जाइछि एंड जो एक्शन टा आगो हुए तापय हमें कोन यूज करू पास्ट परफेक्ट माने अछि जो एक्शन टा आगो हुए तापय हमें यूज करिबा पास्ट परफेक्ट जो एक्शन टा परे हुए तापय हमें यूज करिबा सिंपल पास्ट गॉट इट तो इटी ऑलरेडी फायर ब्रिगेड केम सिंपल पास्ट यूज हेछि एंड फायर वाला रे कोन यूज हबो द फायर हैड बर्न्ड द हट्स
व्हाई कहीं सेटा से कामटा आग हो सारी ओके सो the fire had burnt the huts before the fire brigade came. Okay, now I have what done my work. I have done my work. Okay, I have done my work. Next, do not make a noise. She is sleeping. She is sleeping. Do not make noise. Present continuous. Okay, she is sleeping. Will you go to see a movie? To seeing habo nahi, seen habo nahi. बुझिएला? Will you go to see a movie? Easy. Next. अच्छा next तुमको sentence rearrangement करवा पे हबो. Okay, देखो. For 1,000 years, famous symbols of ancient civilizations, monuments have been created and they are often the most durable and तो आगो कोटा आसीबो तो देखो obviously monuments have been created. Okay, monuments have been created are ta ago hobo then monuments have been created for thousands of years p and they are often the most durable and famous symbols of ancient civilization. बुझिएला? Monuments have been created. Wait. बुझी उची easy अच्छी. Monuments have been created for thousands of years and they are they are often the most durable and famous symbols of ancient civilization. So RPSQ, right? RPSQ को ऑप्शन रे अच्छी देखो. RPSQ option number option number D. Option number D. RPSQ. Okay, बुझिएला? तो देखो एठी फर्स्ट कौन हैला R then P then S and then Q. तो R टारे तुमको कौन लाइक कौन से इम्प्लाई करूची सब्जेक्ट विषय कि कहा विषय को आउची कहा विषय को आउची मॉन्यूमेंट्स विषय को आउची. तो मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड. ओके, मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड. देन सेकंड कौन अछि P. P रे फॉर 1000 ऑफ इयर्स माने टाइम लाइन विषय कहूची केबे क्रिएट कराइछि. मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड व्हेन फॉर 1000 ऑफ इयर्स. okay for 1000 of years and then तापरे कौन आसुची S and they are often the most durable. माने कहा विषय information provide होची monuments like additional information provide करा होची monuments विषय रे. and lastly like Q रे famous symbols of ancient civilization माने एटा like गोटे complete description like conclusion type रो आसुची. okay, बुझिएला? So that's why the like sequence will be R, P, S and Q. Okay, तो चलन तो next देखिबा next rearrangement कौन अछि. okay, तो एटी देखो first देखो subject खोजो. okay, का विषय कहा होछि subject खोजो. तो S रे देखो the conservation status of plants and animals is the subject. okay, तो कहा विषय को आउची conservation status of plants and animals. तो first एटा ही हबो S and then देखो P को देखो is one of the most widely used indicators. माने subject विषय रे तुमको information दोची है ना. the conservation status of plants and animals is one of the most widely used indicators. कहारो indicators indicators for assessing the condition. now for assessing the condition ता third हबो कौन पाई काइना like for assessing the condition is the like तुमको reason provide करूची. okay, the conservation status of plants and animals is one of the most widely used indicators. कहारो
मैंने कोथिपाई फॉर असेसिंग द कंडीशन लाइक द रीजन दउछि तुमको लाइक सॉरी यूसेज बताउछि तुमको है ना आर रे एंड फॉर असेसिंग द कंडीशन कहार कंडीशन लास्ट रे क्यू रे ऑफ इकोसिस्टम्स एंड द डाइवर्सिटी लाइक दैट इज द ऑब्जेक्ट बुझीला फर्स्ट ता होची सब्जेक्ट सेकंड ता होची इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वाला जो लाइन टा सीटा होची दैट इज प्रोवाइडिंग यू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट थर्ड इज फॉर असेसिंग द कंडीशन माने ताय यूसेज विषय कोची एंड क्यू इज द ऑब्जेक्ट ओके of ecosystems and their biodiversity. So the correct sequence kon rahila SPRQ option number SPRQ option number A. Got it? Now next dekho नेक्स्ट देखो एटी भी सेमिति सब्जेक्ट खोज देखो द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्किमिंग इज द सब्जेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्किमिंग ओके द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्किमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस बिकॉज एटी तुमको सब्जेक्ट विषय कुहा होची द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट कौन प्राइस स्किमिंग ओके तो ता विषय इनफॉरमेशन को लाइन रे प्रोवाइड होची लाइन नंबर एस ओके द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्किमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस एंड देन टाइमलाइन ओके then timeline for a short period of time for a short time where a new innovative or much improved product is launched into the market बुझिएला तो Q S P and R Q S P and R option number A बुझिएला Q S P and R okay next देखो सेमिति सब्जेक्ट खोजो द ताजमहल ओके ताजमहल is a what is a beautiful monument okay is a beautiful monument built in 1631 built in 1831 now 80 देखो by an emperor named Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal ओके तो एठी तमे आगो पी रखिबो कि या फिर आर रखिबो ओके देखो तो एठी देखो आगो कौन आसीबो आगो पी आसीबो काइना के बिल्ड करितला ओके दैट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन ओके तो आगो कौन आसिला आगो आसिला द ताजमहल 1 ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट 2 देन की आसीबो किए बिल्ड करितला है ना तो and in the memory of Mumtaz Mahal is the concluding sentence तो sequence कौन रहिला Q S P R Q S P R okay Q S P R तो को ऑप्शन रे अच्छी QSPR ऑप्शन नंबर D ओके नाउ देखो QSRP मध्य अच्छी बट QSRP हम नहीं कहीं ना किए बिल्ड करिथिला इज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे बिल्ड हेतिला सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे बिल्ड हेतिला जदि तमे न भी दउछ ताहले भी ताहले भी चलिबो बट किए बिल्ड करिथिला इज मोर इम्पोर्टेंट नो इन दैट सेंस तो QSPR गॉट इट ओके देन नेक्स्ट देखो एठी भी सेमती गेटवे ऑफ इंडिया फर्स्ट द गेटवे ऑफ इंडिया was designed by the British mane this is giving you additional information about the subject okay so the gateway of India was designed by the British architect George Whitted and was opened
for general public केभे in the year 1924, in the year 1924. तो QPSR, QPSR option number B. Okay, QPSR option number B. Okay, तो तापरे देखो, do you blank these events? Do you like these events? Okay, do you like these events? Next, the dog and the cat blank been fed. The dog and the cat जेतु दीटा जिनस अछंती तो has नुह have been fed. आर कौन पे हमें जति आर ही था तले being ही था been ही न था, so that's why have. Okay, next देखो, his works are appreciable. His works are appreciable. Okay, his works are appreciable. Okay, next देखो, many a man. Now wait, देखो, many a man blank suffered during partition. Okay, many a man blank suffered during partition. तो many जो अच्छी many this is a like this takes singular verb. এটা सबबेले singular, এটা सबबेले singular हुए. এটা सबबेले singular हुए. Okay, तो many जेहेतु singular, it always takes a singular verb. तो many ए सह सबबेले को प्रकार verb आसीबो, singular verb आसीबो. ओके, many ए सह सबबेले केमिति singular verb आसीबो. ओके ओके, तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. The chief along with his family blank involved. तो आम जानछु जितेबेले भी along with किंबा together with किंबा as well as थिबो, as connectors present थिबो sentence रे, तो the verb will always agree with the first subject. Okay, तो एठी first subject की अछि chief, which is a singular noun, and that's why the verb will also be singular. So the chief along with his family is involved. Okay, next देखो, she shall blank soon. She shall come soon. Okay, she shall come soon, right? Next, now measles blank a common disease among children. Okay, so measles is a common disease. Measles is not a plural noun, it is a singular noun, it is a singular collective noun. Okay, जेमती physics, mathematics. Okay, सेमती. So measles is a common disease among children. Okay, next, the board of directors blank anxious. The board of directors has been anxious. Why? Because the board of directors जो अच्छी. Okay, the board of directors is singular. The board of directors, so it is a singular collective noun. Okay, so that's why have been habo nahi, has been habo. Okay, oh wait, no, एठी अच्छा आर अच्छे ना, आर अच्छे, तो जदि सिंपल प्रेजेंट रे जदि भी ही था, बट एठी जेतु आर अच्छे तो सेटा सिंपल प्रेजेंट हबो नाही,
वर भी हब ना कहीं प्लूरल एटा भी प्लूरल जनाऊे एटा भी प्लूरल जनाऊे ओके एंड हैव बीन मध्य प्लूरल जनाऊे तो ओनली करेक्ट आंसर विल बी हैज बीन बुझीगला कौन पाई हैज बीन है कहीं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ओके now देखो few applicants blank backed out now few applicants is a plural subject few applicants is a plural subject so it will take a plural noun so few applicants have backed out okay have backed out next some of the rice is still left rice is still left kahinki kaina rice is a plural uncountable noun बुझेला plural uncountable noun so सेथिपाई is हला now public speaking is a skill okay public speaking is a skill okay public speaking is a skill right next देखो गोटे पैसेज दिखाई तार रिलेटेड तुमको क्वेश्चंस पचाई तो थोड़े पैसेज को रीड कर दवा ओके देखो a man is known by the book he reads as well as by the company he keeps for there is a companionship of books as well as of men and one should always live in the best company whether it be books or of man whether it be of books or of man. A good book may be among the best of friends. It is the same today that it always was and it will never change. It is the most patient and cheerful of our companions. It does not turn its back upon in times of adversity or distress. It always receives us with the same kindness, amusing and interesting us in youth and comforting and consoling us in age. Now let's move on to the questions. Which of the following would be the most appropriate title for the given passage? Now passage को जते बेले तमे देखिबो एनालाइज करिवो तो का विषय क्या होची कुहा होची बुक्स विषय कुहा होची okay a man is known by the book he reads okay as well as by the company he keeps okay a good book may be among the best of friends so book विषय कुहाइछि कि केमिति books केबे भी तुमको लाइक तुमको छाड़ी के जीवे नहीं बुक्स तुमको सह बुक्स रु जो जा नॉलेज तुम गेन कर सेटा तुम सह सब बेले थिबो है ना एंड बुक्स like they do not turn their back in times of adversity माने difficulty जते बेले प्रॉब्लम्स जते बेले हुए सेते बेले से माने तुमको छाड़ी के जीवे नहीं हुए पारे तो माने जो मनीष होती जो फ्रेंड्स लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप्स दे टेंड टू ब्रेक ह्यूमन रिलेशनशिप्स भांगी जाए टाइम सहित बट जदि तमे बुक को निजर फ्रेंड करिवो ताले सी तम मन को केबे भी छाड़ी की जेबे नहीं तो दैट इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट तो अप्रोप्रिएट टाइटल कौन है परिबो देखिबा बुक्स शो द रीडर्स कैरेक्टर नो आई मीन यस बट सुटेबल हबनी ए जगह रे ए पैराग्राफ पई बुक्स एज मैन्स अबाइडिंग फ्रेंड्स books are useful in youth the importance of books in old age now देखो जो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी अछंती तो ऑप्शन सी कौन कहूची ऑप्शन सी कहूची कि बुक्स आर यूजफुल इन द यूथ जब तुम यंग थाओ सेते बेले बुक्स आर यूजफुल व्हिच इज ट्रू बट आगु को भी यूजफुल ना बुक्स आर ऑलवेज यूजफुल irrespective of your age and the importance of books in old age this is not particularly talking about old age because
बुक्स तमको तमें यंग था तमें ओल्ड एज रे एंटर कर बुक्स तम मान सहित सब बेले था तो ऑप्शन नंबर सी हम ना ऑप्शन नंबर डी हम ना बुक्स शो द रीडर्स कैरेक्टर हम ना अप्रोप्रिएट बस ना तो कोट अप्रोप्रिएट बस बुक्स एज मैन्स अबाइडिंग फ्रेंड्स ओके बुक्स आर माने बुक्स को जदि तुम थरे निज सांग बनई नेल एंड बुक सहित तुम टाइम स्पेंड कर नॉलेज गेन कर तो से जिनसटा तुम सह सब बेले थिबो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कंडीशन सिचुएशन एंड एज गॉट इट नेक्स्ट which of the following is opposite in meaning to the word adversity occurring in the passage adversity माने कौन adversity माने होची problems किंबा difficulties तो opposite खोजबार अच्छे तुमको तो happiness prosperity progress and misfortune तो similar ही जाउची progress is like out of context prosperity माने कौन like prosperity माने luxury gained through money है ना and happiness is opposite in meaning so correct answer will be happiness okay next the statement a good book may be among best of friends in the passage means that there cannot be a better friend than a book books may be good friends but not better than good men a good book can be included among the best of friends of mankind and our best friends read the same books तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो इज कम्प्लीटली लाइक आउट ऑफ कंटेक्स्ट सो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट पॉसिबल अ गुड बुक कैन बी इंक्लूडेड अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड एटा लाइक जो जहाँ स्टेटमेंट अच्छी सी लिखाई तो यहाँ भी हम ना नाउ ऑप्शन नंबर बी को आसवा बुक्स मे बी गुड फ्रेंड्स बट नॉट बेटर दैन गुड मैन विच इज रॉन्ग बिकज बुक मैंने हुए तो ह्यूमन्स हमको छाड़ी के जीवे बट गोटे टाइम पे बुक तुमको केवे भी छाड़ी की जेबे नहीं दैट्स वाई लाइक विच मेक्स ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग एज वेल एंड सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट देयर कैन नॉट बी अ बेटर फ्रेंड दैन अ गुड बुक करेक्ट now according to the passage which of the following statements is not true okay so good books as well as good men always provide the finest company है ना then a good book never betrays us तो एटा तो ठीक अच्छी है ना एटा तो ठीक अच्छी a good book never betrays us we have sometimes to be patient with the book as it may bore us which is also correct why kinda a good book like a book never gets bored of you may get bored of a book तो जदि तमे like book तम मन को बोर हब नहीं तमें मैंने बुक पढ़ु पढ़ु बोर हो पार एंड दैट्स वाई यू नीड टू बी पेशेंट ओके से सी भी करेक्ट अच्छी अ गुड बुक सर्व्स एज अ परमानेंट फ्रेंड विच इज ऑल्सो ट्रू आम देखिलु ए तो यही तीनटा जाक हो पार ना कहीं ना ये तीनटा जाक ठीक अच्छे तो भूल कौटा हम कि good books as well as good men always provide the finest company देखो good books always provide you the finest company but men जो human relationships tend to change with time है ना तो that's why they will not always provide you the finest company जेहेतु ये always लगे देछि तो सेथिपाई which makes it wrong got it so the correct answer will be option number A okay now next according to the passage, a man may usually be known by the books he reads. A man may usually be known by the books he reads because his reading habits show that he is a scholar. No, এটা তো হবে নাই. Okay, এটা তো হবে নাই. Next देखो, the books he reads affect his thinking. The books he reads affect his thinking but এটা তো মানে কোন like consequence of reading a book है ना
कि बुक पढ़िले तमरो थिंकिंग इम्प्रूव हुए है ना. तो द बुक ही रीड्स अफेक्ट हिज थिंकिंग. लाइक दिस इज द कॉन्सिक्वेंस. Books provide him a lot of knowledge. This is also like consequence. This is also a consequence or effect. Okay. Now like क्वेश्चन तुमको कौन पचारछि कि जने जदि बुक पढ़ुछि तो लाइक जो बुक पढ़ुछि सेटा लाइक बुक पढ़िबारु तुमको से मनुष्य विषय रे से मनुष्य विषय रे कौन जाना पड़े है ना. तो देखो हिज सिलेक्शन ऑफ बुक्स जनरली रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर. तो ये ठीक हम कहीं ना जो बुकटा जड़े पढ़ुची तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ बुक्स विल टेल अबाउट योर कैरेक्टर. तुम्हें कौ भली मनीष सेटा जना पड़ो तुम्हें कौ भली बुक्स चूज करुछ. द बुक्स यू डिसाइड टू रीड tells about your like speaks about your character and your temperament. Okay. Next, gluten is related to eat as garrulous is related to जेमिति gluten कौन. gluten is a person who eats excessively. like जे बहुत खाए ताकू कहते gluten. सेमती garrulous काकू कहते जे excessively कथा कुए. A person who talks excessively is called garrulous. What by? Okay. Clear? Next. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन. dwell is related to denizen as inherit is related to what? dwell माने कौन गोटे जगार रहिबा. सर्वाइव लाइक रेसाइड करवा रहिबा. ओके. सेमिति डेनिजन कौन. डेनिजन होची लाइक if a plant or a person or an animal is found in a particular place गोटे स्पेसिफिक जगार गोटे जिनस को गोटे स्पेसिफिक जगार जने रोचे तो दैट इज डेनिजन. ओके. बुझेला. इनहेरिट सेमिति इनहेरिट कहा सह रिलेट करे. इनहेरिट माने होची किछि जिनस तमे तुमको मिलुछि एज अ लेगेसी. किछि सेटा लाइक तमे किछि रिसीव करूछ एज अ लेगेसी. सेटा गोटे आइडेंटिटी हे परबो है ना. लाइक तमो लाइक तमर एंसेस्टर्स रु तमे रिसीव करलो. तुम गोटे आइडेंटिटी हे पारे गोटे कैरेक्टरिस्टिक हे पारे गोटे लाइक प्रॉपर्टी हे पारे. ओके. तो दैट इज इनहेरिट. सेमिति एयर. ऑप्शन नंबर डी. एयर इज सिमिलर टू इनहेरिट. Now this is not pronounced as hair, it is pronounced as air, not hair, it's air. Okay. So air is similar to inherit. Why? Because तार माने भी सिमिलर कि जदि जने मरी जाउछि ता भागर जो प्रॉपर्टी टा सेटा तुमको मिलिबनी जे निज ऑटोमेटिकली. ओके. लाइक अकॉर्डिंग टू लीगल राइट्स तुमको गोटे प्रॉपर्टी मिलुछि कि गोटे आइडेंटिटी मिलुछि. ओके. सो इनहेरिट इज सिमिलर टू एयर. नाउ अक्वायर कौन पे हबनी. अक्वायर माने होछि तुमको निजे निजे मिलो तुमको किनिबा पे हबो. ओके. एंड सक्सेसर माने कौन. सक्सेसर माने लाइक जदि जणे जनकर डेथ हे गला लाइक आगुरु जेमती डायनेस्टीज रे होतला. Father dies and then his son becomes the next king, so that is successor. Okay. आउटकास्ट माने कौन. लाइक एक्सेप्ट न करिबा. न करिबाटा होची आउटकास्ट. सो बुझियला एयर कौन पे हला बुझियला. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट होची राइटर इज रिलेटेड टू रीडर एज प्रोड्यूसर इज रिलेटेड टू व्हाट. प्रोड्यूसर इज रिलेटेड टू कंज्यूमर. Okay. Producer is related to consumer. Producer produce करुछि, consumer consume करुछि. Okay. Next देखो active voice दिया छै तमन को passive voice रे change करबार अछि. So I will clean the house every Saturday. I will clean the house every Saturday.
এটা active voice ना passive voice रे कौन हो the house blank by me every Saturday. So the house will be cleaned by me every Saturday. Will be cleaned by me. Will cleaned is grammatically incorrect. Cleaned होगा नहीं. Okay, so will be cleaned. Okay. Next देखो people blank walk on grass. So people must not walk on grass. कहीं ना like couldn't, needn't, like could not, need not and may not टा कौन like गोटे strict restriction को represent करनांती but must not गोटे strict restriction को like imply करूची कि मतलब something which is not allowed. Okay, so people must not walk in grass. Okay. Next देखो choose the correct word order. Okay, now why she did leave so early एटा भी देखो हम कोई थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जितेबले तुमको फॉर्म करबार अछि सेतेबेले सबबेले मने रखिबो कि WH वर्ड परे सबबेले हेल्पिंग वर्ब प्लेस हबो हेल्पिंग वर्ब किंबा मेन वर्ब बट वर्ब प्लेस हबो WH वर्ड परे सबबेले वर्ड लाइक वर्ब प्लेस हेइथिबा निहाती दरकार सेतेबेले ही केवल सेतेबेले ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस टा ग्रामेटिकली ठीक हबो. ओके, सो गोटे ही सेंटेंस रे वाई परे डेड लगी देखो वाई डिड शी लीव सो अर्ली एंड इथरे भी अच्छी बट वाई डिड सो अर्ली शी लीव इज नॉट अप्रोप्रिएट. सो एटा हम नहीं. सो ठीक कौन हम ऑप्शन नंबर बी. ओके, वाई डिड शी लीव सो अर्ली एटा एथि भी करेक्ट हम कहीं ना वाई प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट आसे. ओके, सब्जेक्ट आसे तो say the point. Why did she leave? She is the subject now. So why did she leave so early? Got it? Next. देखो select same meaning of the underlined word. Take care not to get hurt with the steam from the kettle. Okay. Now get hurt with the steam from the kettle. बर्ଣ୍ट हम नहीं कहीं ना बर्ଣ୍ट होची जदि लाइक फायर रो तुमको लाइक जदि किसी इंजरी है फायर बिकॉज ऑफ फायर तो एठी भी लाइक फायर अच्छी बट लिक्विड लाइक हॉट लिक्विड ना स्टीम माने कौन हॉट लिक्विड तो बर्न्ड एथि हम नहीं. ब्रुइज्ड कौन ब्रुइज्ड होची लाइक स्किन रे पैचेस आसीजिबा. ओके, माडो बाजी थिबारु स्किन रे पैचेस आसीजिबा तो दोज आर कॉल्ड ब्रूजेस. तो ब्रुइज्ड भी हम नहीं. स्कैल्डेड कौन स्कैल्डेड होची जदि लाइक इंजरी हबा कोथिरु हॉट लिक्विड रो तो एटा हबो सिमिलर मीनिंग like this is similar in meaning to get hurt. Okay, and cut भी हम नहीं कहीं ना cut होची injury due to a sharp object like knife वगैरह. Okay, so कौन हबो scalded. Okay, scalded. next देखो blank his principles he has to be very careful with regard to. with regard of हुए नहीं with regard on हुए नहीं because कहीं हुए नहीं कहीं ग्रामेटिकली करेक्ट न हो एगुड़ा. ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट न हो तो with regards to हबो. ओके, with regard to his principle he has to be more careful. बुझिएला. नेक्स्ट he was seen going कहीं ना seen परे सब बेले ing फॉर्म रे आसीबो वर्ब. गॉट इट? सीन परे सब बेले ing फॉर्म रे वर्ब टा आसीबो. सो ही वाज सीन गोइंग टू द स्कूल. नाउ दे ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी blank his honor. That Ajita was not invited blank it was a shame. She admired him most and it seems unlikely that she would forgive the organizers blank their omission. Okay, so they organized a party in his honor. In his honor. गोटे ऑप्शन रे आगो इन अछि. ऑप्शन नंबर सी.
they organized a party in his honor that Ajita was not invited to it. Okay, was shame to it. Okay, invited to it. She admired him most, and it seems unlikely that she would forgive the organizers for their omission. Got it? So option number C will be correct. Now, when I say that the benefits of demonetization are moot, what do I mean? What is moot? Moot माने जदि किसी जिनसर effectटा होची negligible and so you do not consider it. ताकू consider ही करिबनी काइना it is not worth considering तारो effectटा negligible. बुझियला तारो benefitटा negligible. So when I say that the benefits of demonetization are moot, what does that mean? That I do not understand what the benefits are. I understand what the benefits are. Okay. ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ benefits ଅଛି but the benefits are negligible. Okay. So option number A तो होगा नहीं. That I do not understand what demonetization is, which is also wrong. Demonetization माने तो जानी थिबा दरकार ना. So this is also not correct. That the benefits of demonetization are surely seen. It is like एकदम ही incorrect because already like sentence required moot achi negligible achi. Okay, so option number D kono that the benefits of demonetization are debatable. Debatable माने like कौन थी like एमिति कि तमे like question करि परिबो like ambiguous clear नुह. Okay, so that's why. Okay, एठी तुमको like appropriate prepositions सह match करिबार अछि. So according सह to आसे. Okay, according to, different from, based on, buoyed by, consisting of. So according to माने 1 रो 2, 1 रो 2, then 2 रो 4, 3 रो 5. को 3 अच्छी 1 2 2 4 3 5. Option number A. Okay, बुझेला. Next देखो, he had earned his well paid job after a long struggle, but when he laughed at the most inopportune time, it cost him the job. तो एठी तुमको verb list करिवार अछि. Verb कौन एठी verb कौन? First hela earned, then laughed, and then cost. Okay, so earned, had earned, laughed, and cost. Option number B. Got it? Option number B. Next देखो, which of the statements about the following sentence is true? The Raos had been living so frugally all year that they saved enough money for a Mercedes. Okay, that they saved enough money for a Mercedes. माने जो Raos माने गोटे particular group of people or community. Okay, so they had been living so frugally माने गोटे like एते कम खर्चरे चलुथिले कि से माने enough money save करिथिले गोटे Mercedes जो थे कि से माने गोटे Mercedes नहीं नेले. Okay, so okay, now तुमको like false statement खोजबार अछि ना sorry, which of the statements about the following sentence is true? Okay, देखो तो पहले तो देखो the present perfect continuous. तो sentence टा present perfect continuous अछि कि नहीं? had been is what? past perfect continuous. Okay, past perfect continuous. तो गोटे option रे अछि past perfect continuous. देखो option number B. Also आउ कौन? The past perfect continuous tense used here indicates an ongoing state prior to a past action. तो दीटा जाको action देखो, दीटा जाको action माने को action like बहुत कम खर्चरे रहिबाटा भी गोटे past action आउ like to save enough money for a Mercedes टा मध्य गोटे past action ही.
तो गोटे लाइक मनी सेव करवा पूर्वरु गोटे ऑनगोइंग एक्शन कौन चलुथिला कि से माने रही आसुथिले बहुत कम खर्च रे. दैट वाज द एक्शन प्रायर टू सेविंग मनी फॉर मर्सिडीज. बुझियला सेथिपाई एठी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूजेज. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. गॉट इट? Okay. Choose from the options how the sentence can be improved. So they could not admire his bright performance because of they dislike him. Because of they dislike him is grammatically incorrect. Okay, so they could not admire his bright performance because they dislike him. बुझियला? Because they dislike him. Okay. Okay, next देखो. She was uneasy because she never be on a plane before. Okay. तो ताकू uneasy feel होतला काइना से केबे भी अपूर्वरु plane रे travel करी नथला. तो एटा correct option कौन हबो कि she was uneasy because she had never been on a plane before. Okay, she had never been on a plane before. कहीं ना से पूर्वरु माने या पूर्वरु केबे भी प्लेन रे ट्रैवल करी नहीं. तो दैट्स व्हाई she had never been on a plane before. Okay, बाकी जो B and C अछि सेगुडा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ओके, बुझियला? नेक्स्ट देखो. they only work when they have no money. तो याकू तुमको ठीक करिबार अछि. ओके, they only work when they have no money. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, when they have no money they only work. तो या माने कौन आसुची सेंटेंस रो माने कौन आसुची कि ऑप्शन ए रे when they have no money they only work. ओके, जेते बेले तांको पाखरे पैसा न थाए से माने केवल काम करनते. ओके, तो एटा हबो नाही एंड दे ओनली वर्क भी हबो नाही. ऑप्शन नंबर सी को आसो वर्क ओनली व्हेन. तो एटा तुम बसई कि देखो दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी. दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी. तो ओनली टा कौन पे यूज हुए किछि गोटे कौन कहती कथारे लाइक स्ट्रेस सेंस ऑफ प्रेशर पकेबा है ना कि मैंने स्ट्रेस दे कि गोटे कथाटा को कहूँ से ओनली टा यूज हुए. तो ऑप्शन नंबर सी टा ठीक हम. ओके, ऑप्शन नंबर सी टा ठीक हम. तो कौन हम सेटा कि दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी. तो से मैंने काम करबा पे केतेबेले जानती जेतेबेले तांको पाखरे पैसा न थाए. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट देखो, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस हाउ द सेंटेंस कैन बी इम्प्रूव्ड. ओके, सो IT experts may have to stop hunting for better job opportunities as these are not so easily available now. Okay. So देखो IT experts may have to stop hunting for better job opportunities as these are not so easily available now. Option number A देखो no correction required. Okay, इसरा में पर देखिबा आगो एनालाइज करबा बी सी एंड डी को. ओके, सो देखो बी को देखो मे बी स्टॉपिंग द हंटिंग. IT experts may be stopping the hunting is not grammatically correct. Okay, option number C देखो IT experts should have to stop hunt. should have to stop परे केबे भी verb टा first form रे न थाए, verb टा ing form रे हुए. So this is also grammatically incorrect. Option number D को आसो IT experts might have to stop hunting. So may have to stop hunting and might have to stop hunting. Both are grammatically correct. Okay, both are grammatically correct.
तो बट एठी कौन पचार कि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार कि बट ये किसी इम्प्रूवमेंट दरकार ही नहीं कहीं सेंटेंस ऑलरेडी लाइक लॉजिकल फ्लो भी ठीक अच्छी एंड प्लस ग्रामेटिकली सेटा सेंटेंसटा ठीक अच्छी तो ऑप्शन नंबर ए नो करेक्शन रिक्वायर्ड बुझीगला सो जो सेंटेंस ऑलरेडी गिवन सेटा ठीक अच्छे ओके IT experts may have to stop hunting for better job opportunities as these are not easily available now. Got it? Now next question. Choose from the options how the sentence can be improved. The NYC building at New York City is as high as every other building in the United States of America. Is as high as every other building in the United States of America. Okay, so option देखो high than every other building, which is wrong. High than every other, which is wrong. Okay, next देखो as high as every other building, as high as every other building, higher than any other building. Okay, so तो देखो ऑप्शन एटा तो भूल कहीं ना हायर दैन पर दैन सहित एवरी लगी है ना तो दैन सहित एवरी लगे ना ओके दैन सहित एनी लगे तो दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ओके ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए ना ऑप्शन नंबर बी देखो एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग वेट as high as every other building तभी मध्य wrong हम कहीं ना ये इक्वालिटी पोर्ट्रे करुचे ना लाइक NYC बिल्डिंग को तमें जदि कंपेयर करुचे अलग बिल्डिंग सह न्यूयॉर्क सिटी रे तो as high as रे तो तमें इक्वालिटी देखी दोचे तो तुम्हें कंपेयर केमिति करुचे तो दैट इज व्हाई as high as every other building टा wrong like sense टा ठीक बसु नहीं. Now option number C देखो higher than any other building which is correct. Higher than any other building okay which implies इटा कौन imply करुची कि NYC building टा is and like NYC building is taller than all the other buildings in that area okay बुझीगला तो एंड नो इम्प्रूवमेंट अभी हम नहीं कहीं ना क्वेश्चन सेंटेंस रे कौन अच्छी एज हाई एज अच्छी तो एज हाई एज तो हम नहीं बुझीगला तो हायर दैन एनी अदर बिल्डिंग गॉट इट देखो she as well as her choose the correct part of speech for the words in bracket okay she as well as her sister is engaged okay तो इटा कौन गोटे कंजंक्शन टा इटा गोटे कंजंक्शन टा ओके बुझीगला नेक्स्ट देखो choose the correct part of speech for the word in bracket the politician is notorious corruption for corruption okay so for टा कौन गोटे preposition for टा होची गोटे preposition okay next this golden ring is too costly to purchase is too costly to purchase तो costly टा कौन adjective कहीं ना कॉस्टली टा कौन का विषय कहूची गोल्डन रिंग विषय सो गोल्डन रिंग टा होची नाउन एंड द वर्ड दैट टेल समथिंग और लाइक द वर्ड विच स्पेसिफाइज अ नाउन इज एन एडजेक्टिव ओके बुझेला नेक्स्ट अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ a drowning man देखो drowning टा actually कौन verb drowning टा कौन गोटे action word so drowning is a verb but a sentence रे drowning टा as a noun use होइछि कि नहीं a drowning man so a drowning man implies कि drowning टा एठी गोटे as a noun use होइछि तो
जिते बेले गोटे वर्ब एज अ नाउन यूज हुए से कौन कह जाए से कह जाए जेरेंड एंड जेरेंड रो फॉर्म कौन v1 प्लस ing बुझीगला नेक्स्ट A great talker is a great liar. A great talker is a great liar. तो एठी देखो कौन आर्टिकल तो हम ना वर्ब मध्य हम ना प्रनाउन हम कि प्रनाउन भी हम ना बिकॉज लायर इज एन ऑब्जेक्ट ओके सो एटा हम नाउन बुझीगला एटा हम ओके बुझीगला नेक्स्ट नेक्स्ट देखो eat to live but do not live to eat. Eat to live but do not live to eat. To live. Eat to live. This is an infinitive. This is an infinitive. Correct? This is an कहीं ना infinitive रो जो फॉर्म हुए infinitive रो जो फॉर्म हुए सेटा हुए टू प्लस v1 फॉर्म ओके टू ईट टू लिव सो एटा गोटे इनफिनिटिव बुझीगला एटा गोटे इनफिनिटिव ओके नेक्स्ट देखो अनीता ब्लैंक फॉर द चैरिटेबल कॉज अनीता कम टू कंट्रीब्यूटेड रॉन्ग अनीता केम टू कंट्रीब्यूटेड रॉन्ग केम टू कंट्रीब्यूट कम टू कंट्रीब्यूटेड तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग ऑप्शन बी भी रॉन्ग now came to contribute this is correct okay option C is correct and again option D comes to contributed is again wrong बुझियला तो Anita came to contribute for the charitable cause okay next देखो everyone at the party blank amazed by his performance everyone सब बेले निये singular verb okay so everyone at the party was amazed by his performance okay next Alice is not at home at the moment she blank work she is at work she is at work okay she is at work okay she is at work she was on work हब नहीं एक तो was हब नहीं कहीं ना तुमको Alice is not at home at the moment तुमको like present current जो moment अच्छी ता विषय को आउच तो was तो हब ही नहीं and is वाला कौन अच्छी is on अच्छी is on work हुए नहीं is at work हुए बुझियला Next, देखो French people love cooking. Blank the English do not seem very interested. So French people love cooking, whereas the English do not seem very interested. Okay. Whereas माने तमें दीटा sentence को compare करछो. These two sentences are contrasting. French people love cooking but English people do not love cooking. So these are two contrasting sentences. So तमें एठी कौन use करिवो? Whereas okay whereas बुझियला next देखो choose the correct statement my aunt who lives in Mumbai is a doctor my aunt who lives in Mumbai is a doctor my aunt who अच्छा comma my aunt who lives in Mumbai comma is a doctor my aunt who lives in Mumbai is a doctor my aunt who lives in Mumbai is a doctor तो comma रो placement देखिबार अछि ओके comma रो तुमको एडी placement टा कोडा ठीक कोडा भूल सेटा बुझिबार देखो एठी लाइक तुमको कौन माइंड रे रखिबार अछि use of a non restrictive clause and a proper comma placement okay use of कौन non restrictive clause and a proper comma placement तो देखो this sentence टा अछि my aunt who lives in Mumbai so my aunt टा कौन enough एटा जानिबा पे कि मोर गोटे ही आंटी ओके सो माय आंट सो आई हैव ओनली वन आंट सो माय आंट टा होची स्पेसिफिक ओके
now who lives in Mumbai टा गोटे कौन गोटे क्लॉज टा आउ एटा गोटे एक्स्ट्रा क्लॉज टा ओके which is not essential एटा गोटे एक्स्ट्रा एड ऑन हिची जोटा एसेंशियल नथिला माय आंट इज अ डॉक्टर कहले भी चली थांता बट एटा गोटे हु लिव्स इन मुंबई माने जे मुंबई रे रहंती मो आंटी जे मुंबई रे रहंती सेटा गोटे तमे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूछ जोटा कि न प्रोवाइड करले भी मध्य हे थांता बुझियला तो से माई आंट गोटे स्पेसिफिक लाइक सब्जेक्ट तो तापर कमा लगे एंड हु लिव्स इन मुंबई पर कमा लगे ओके तो से लाइक हु लिव्स इन मुंबई गोटे स्पेसिफिक लाइक एडिशनल इनफॉरमेशन तो ता पूर्वरु एंड तापर कमा लगे तो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन हम ऑप्शन नंबर बी टा ओके ऑप्शन नंबर बी Next देखो wait a minute I blank this box for you I will carry this box for you I will carry wait a minute I will carry this box for you okay next देखो it's wet and rainy outside today it is wet and rainy outside today you blank go out without an umbrella you should not this is like गोटे kind of advice okay तो you should not okay you should not change into passive the salt water corroded the metal beams the metal beams were corroded by the salt water जेहेतु beams plural अच्छी तो were corroded okay was corroded नुह were corroded okay बुझेला next the headmaster blank to talk to you the headmaster wants to talk to you wants to okay so wants to headmaster जेहेतु गोटे singular noun so it will take a singular verb okay so the headmaster wants to talk to you okay okay next देखो a bomb scare blank a delay of the flight a bomb scare was caused habani cause habani kind of a bomb scare is a like is a singular event so causes he thanta if it was a fact but it is not a fact okay so cause haba nahi was caused haba nahi causing bhi haba nahi a bomb scare causing a delay of flight is also not correct so a bomb scare had caused a delay of flight a bomb scare had caused a delay of flight okay bujhela next everyone understands english is understood everyone understands english is understood by everyone english is understood by everyone okay next देखो the diamond ring that her husband bought for her turned blank to be a fake one turned out to be a fake one okay turned in हुए नहीं turned off हुए नहीं turned out हुए ओके सो जिते तुम कॉन्सिक्वेंस विषय कौच है ना या रिजल्ट विषय कौच तो तुम टर्न आउट यूज कर सो लेट्स से जदि तुम कह कि तुम गोटे किसी प्लान करिछ ओके तुम जदि किसी प्लान करिछ गोटे जीवार प्लान करिछ तो तुम कह लेट्स सी हाउ द प्लान टर्न्स आउट देखिबा कौन रिजल्ट होची प्लान रो है ना कौन होची आगु को जाइके ओके सो काइंड ऑफ दैट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टॉम ब्लैंक टू कॉल सुशान yesterday but he has forgotten Tom was supposed to call Suzanne yesterday but he has forgotten okay but he has forgotten तो
yesterday जेहेतु लगी तो टॉम was supposed to बुझीला जेहेतु yesterday जेहेतु काली ताकू कॉल करि पारथिला सो टॉम was supposed to call Suzanne बुझीला next choose the correct statement she is senior junior परे सब बेले कौन लगे टू लगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बुझीला she is senior to me she is junior to me okay not than okay. Next, choose the correct statement. I will inform them. I will inform them of this. I will inform this to them. I will inform them with this. Okay. तो एठी देखो तुमको करेक्ट यूसेज एक तो एठी वर्ब कौन इनफॉर्म तो तुमको करेक्ट यूसेज ऑफ इनफॉर्म देखिबार अच्छी ओके एंड ऑब्जेक्ट कौन अच्छी एठी देम एंड ऑफ भी मध्य यूज करबार अच्छी काइना इट इम्प्लाइज व्हाट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड कौन इन्फॉर्म करा उची सो ऑफ यूज हबो बुझिएला ऑफ यूज हबो तो sentence 1 देखो I will inform them is incorrect because this purburu okay this with like this immediately परे them आसी पारिबो नहीं देखो I will inform them एटा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कहीं ना दिस परे निहाती गोटे प्रिपोजिशन दरकार बुझेला दिस परे निहाती गोटे प्रिपोजिशन दरकार इफ ता परे गोटे ऑब्जेक्ट प्लेस होइछि तो एठी जेहेतु दिस आउ देम मझिरे गोटे भी प्रिपोजिशन नहीं सो दैट्स व्हाई दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बुझेला दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नाउ I will inform them of this. I will inform this to them. I will inform this to them. मध्य इनकरेक्ट अच्छी काइना देखो एक तो एठी तमे ऑफ रो यूज करिनो माने एठी किछि सेंस आसुनी कि व्हाट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड ओके को विषय रे इन्फॉर्म करूछो एटा तमे किछि स्पेसिफाई करूनो सेंटेंस रे okay so that's why C madhya wrong he jibo D madhya wrong achi I will inform them with this with ta bhi eti hobo nahi kaina with ta kono gote like means zariya ko like बुझी पारछो गोटे means को indicate करूची by which means है ना तो एटा भी like logical flow बसुनी ठीक तो एटा भी मध्य होबो नहीं तो correct कौन होबो wait correct कौन होबो I will inform them of this तो एठी सबू like सबू सेंस रे ठीक होची काना देखो verb रो correct usage हिची I will inform परे them अच्छी now of भी मध्य यूज हिची है ना of भी मध्य यूज हिची तो एटा ठीक अच्छी ओके काइना inform परे person अच्छी इन्फॉर्म परे देम अच्छी तापरे ऑफ अच्छी तापरे ऑब्जेक्ट अच्छी ओके बुझिएला तो आई विल इन्फॉर्म देम ऑफ दिस ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट शी लिव्स टू एन अपार्टमेंट शी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट शी लिव इन अपार्टमेंट तो देखो सेंटेंस नंबर डी तो होबो नहीं शी लिव्स she live hobo nahi she lives hobo and in apartment hobo nahi in an apartment hobo D wrong C ta madhya wrong because in an apartment हुए on an apartment हुए nahi to an apartment madhya हुए nahi she lives in an apartment okay which sentence is correct we will go shopping soon we will go a shopping soon incorrect okay incorrect we will go to shopping soon we will soon be incorrect we will go to shopping soon be incorrect we will go shopping soon this is correct okay this is correct तो एठू तमे कौन जानु छो कि लाइक
कौन जानिलो कि गो परे शॉपिंग डायरेक्टली यूज हुए, गो परे आउ किछि लाइक यूज हुए नहीं, ओके आर्टिकल या फिर प्रीपोजिशन बुझेला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I am tired of working. I am tired of working. I am tired to working. I am tired to working. I am tiring of working and I am tired and working. तो ऑप्शन नंबर ए बुझेला। आई एम टायर्ड टू वर्किंग भी इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, आई एम टायरिंग ऑफ वर्किंग भी इनकरेक्ट, एंड आई एम टायर्ड एंड वर्किंग, आई एम टायर्ड एंड वर्किंग ता लाइक ठीक बसु नहीं कहीं ना ये लाइक मीनिंगटा होची एम्बिगियस, मीनिंगटा यहाँ तुम लाइक क्लीयर हो पारन कि कौन कहवाई चाहूँगी। आई एम टायर्ड एंड वर्किंग है ना, तो ये मीनिंगटा होची एम्बिगियस हो जाऊँगी। सो आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग रे तुम सीधा सीधा बुझीपार कि मु थकी जाइए काम करी करी, बुझेला। नेक्स्ट देखो देखो नेक्स्ट देखो डजंट इन इंट्रीग यू, डजंट इट इंट्रीग यू, इंट्रीग सो द वर्ड इन द ब्रैकेट मीन्स इंट्रीग माने कौन, माने टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, ओके। तो इंटरेस्ट क्रिएट करवा मीनिंग जानुची और लाइक उत्सुकता, उत्सुकता, ओके। सो arouse interest will be the correct answer, okay, arouse interest will be the correct answer, option number A। offense no ho, tiredness no ho, pleases no, arouse interest, okay। next, the branches of the tree were fondling the sky, the branches of the trees were तो fondling माने होची touching, okay, fondling माने होची wait, fondling माने होची touching, okay। so the branches of the tree were fondling the sky, एमिति लागुथिला कि आकाश को से माने टच करछंती, okay। next, what is the synonym of veracity? देखो inaccuracy हबो नहीं, okay, veracity माने होची truth और reality, okay, veracity माने होची truth और reality, तो inaccuracy हबो नहीं। now redundancy माने कौन, redundancy माने होची something which is unnecessary, okay, unnecessary, falsehood माने untrue, बुझेला। give the antonym of military, antonym of military, okay। so antonym कौन है, तो ये correct कौन हबो, the antonym of military is civil, okay, the antonym of military is civil, तो बुझेला। मिलिटरी रो एंटोनिम होची सिविल। नाउ मिलिटेंट कौन, मिलिटेंट इज अ पर्सन हु इज इन मिलिटरी, हु वर्क्स इन मिलिटरी, बुझेला। सिविलिटी माने कौन, सिविलिटी माने होची सभ्यता, सिविलिटी माने होची सभ्यता, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट खूब माने कौन, खूब माने होची जदि गवर्नमेंट रे गोटे सडन चेंज हुए एंड से चेंजटा लाइक ऑफन सेटा इलीगल हुए, तो दैट इज कूप, ओके, दैट इज कूप। तो ये मिलिटरी रो एंटोनिम तुमको पचारिछि सेटा होची सिविल, ओके, सेटा होची सिविल, ओके। नेक्स्ट देखो opposite in meaning to the word embrace, okay, embrace। now disobey, contradict, तो embrace रो जनरल मीनिंग कौन, टू include, include करवाटा होची embrace। तो disobey तो कौन, जोटा को तमे obey करिवो नहीं, तो एटा तो हबो नहीं। contradict माने to say the opposite of something, okay। and obscure, obscure कौन, जेतेबेले something is not easy to understand, ambiguous, okay, something which is ambiguous or not clear, बुझेला। तो एठी embrace to include, तो एठी like opposite हबो reject, opposite हबो reject, बुझेला। okay, so next देखो opposite in meaning to the word subversion, okay,
तो सबवर्जन माने कौन? सबवर्जन माने होची लाइक अटेम्प्ट करिबा टू डिस्ट्रॉय और डैमेज एन एस्टैब्लिश्ड सिस्टम और गवर्नमेंट जोटा कि गवर्नमेंट हो पारे या फिर अलग कौन से एस्टैब्लिश्ड सिस्टम हो पारे ताकू डिस्ट्रॉय करिवार अटेम्प्ट, दैट इज सबवर्जन. तो तारो कौन ऑपोजिट मीनिंग तुमको खोजबार अच्छे. ओके, तो ऑपोजिट मीनिंग तुमको खोजबार अच्छे. तो एठी तमे जदि देखिबो डीएस्टेबलाइजेशन, तो एटा डीएस्टेबलाइजेशन टा होची सिमिलर मीनिंग टू सबवर्जन. ओके, केना एटा भी मीन करूची जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स या फिर एस्टैब्लिश्ड जो अथॉरिटी अच्छी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी ताकू डिस्ट्रॉय करबा. आउ सबवर्जन रो भी सेम ही मीनिंग. तो ऑप्शन नंबर ए हबो नै. क्लैरिटी मीन्स कोन? To make something clear. Okay, sanity means kind of the state of being sane. Okay, the state of being sane and calm and cool. Okay, and compliance mane hochi like faithful rahiba towards government or any established institution authority. Okay, faithful rahiba. तो एटा होची opposite to the meaning of subversion. बुझेला? तो आंसर कौन हबो? compliance. बुझेला? compliance. ओके, नेक्स्ट देख. नेक्स्ट होची सिनिस्टर ऑपोजिट मीनिंग रो वर्ड कौन? ओके, सो सिनिस्टर माने कौन? सिनिस्टर माने होची समथिंग विच इज इविल और डेंजरस. तो तार ऑपोजिट कौन हबो? गुड. तार ऑपोजिट हबो गुड. ओके, नेक्स्ट. She wasn't feeling well, so she was blank to go to the evening party. So she was reluctant. Okay, reluctant means not ready to do something. Okay, not agree to do something or not be ready to do something. Okay, so that is reluctant. Okay, नाउ रिलायंट माने कौन? डिपेंडेंस. जदि तमे कहा उपरे या फिर किसी जिनस उपरे डिपेंड करूछ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिलायंट. रिलेंक्विश्ड मीन्स कौन? रिलेंक्विश मीनिंग होची कि किसी जिनस को छाड़ी दबा, पूरा पूरी छाड़ी दबा, त्यागी दबा. ओके, रेजिस्टेंस माने कौन? टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. बुझिएला? तो ये कौन हम? रिलेक्टेंट. ओके, ही फायर्ड हिज असिस्टेंट फॉर असेसिंग हिज फाइल्स विदाउट हिज कंसेंट माने परमिशन. विदाउट हिज कंसेंट. बुझिएला? विदाउट हिज कंसेंट. एंड कंसेंसस मीनिंग कौन? कंसेंसस मीनिंग होची अग्रीमेंट, बट अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, बहुत जन मिसिकी जो किसी जिनस अग्री करेंगे, दैट इज कंसेंसस. एंड कंसेंट इज इंडिविजुअल. ओके, कंसेंट इज पर्सनल. ओके, सो ये कंसेंट हम, नॉट कंसेंसस. कंटेम्प्ट मीनिंग कौन? कंटेम्प्ट मीनिंग होची जदि तमे किसी जिनिस को वैल्यू करूना, लाइक तमे जदि भाबिबो. ओके, तमे जदि एमती भाविबो that somebody or something does not deserve any respect, so that is contempt. Okay, that is contempt. And concede माने कौन? concede माने होची जते बेले तमे admit करूछो, माने when you admit that something is true but तमे करिवा पे चाहूनो, but still तमे admit करूछो, okay, that something is true, that is concede. Okay, माने मनो न थिबा मनो नाही हेले भी तमे अग्री करूछ. ओके, दैट इज कंसीड. ओके, नेक्स्ट देखो. In each of the following questions, 4 words are given, of which 2 are most nearly the same or opposite. Okay, तो एमिति दीटा वर्ड्स फाइंड करबे छै. सो withstand, climate, hot, surrender. सिमिलर कौन लगुच या फिर ऑपोजिट कौन लगुच? ओके, देखो. सरेंडर माने कौन? सबमिट, लाइक सरेंडर माने
निजे निजको तमे सरेंडर करदेल माने तमे सबमिट करदेल सबमिसिव और लाइक निजर डिफीट एक्सेप्ट करनेल बुझिल निजर डिफीट एक्सेप्ट करनेबा होची सरेंडर करदेबा नाउ एंड क्लाइमेट तो मैंने जानछ क्लाइमेट वेदर कंडीशन हॉट मैंने जानछ बहुत गरम ओके नाउ विथस्टैंड माने कौन विथस्टैंड माने होची टू रेजिस्ट ओके या माने जोटा कहती सामना करवा ओके डटे रहना जो कहती ओके सो किसी भी कंडीशन रे तमे हार मानिब नहीं सो दैट इज विथस्टैंड एंड सरेंडर माने कौन तमे गिव अप कर दोछ तो विथस्टैंड एंड सरेंडर आर ऑपोजिट इन मीनिंग सो 1 and 4 ऑप्शन नंबर बी 1 and 4 बुझेला नाउ नेक्स्ट देखो ग्रेगेरियस क्विक्सोटिक सोशलेबल एंड डिसर्नेबल तो ग्रेगेरियस माने समस्तंक सह समवन हु लाइक्स टू बी विथ अदर पीपल ओके सो समस्तंक सह मिसिक रहबा ता जाको भल लागे सो दैट इज ग्रेगेरियस एंड सोशलेबल रो भी सिमिलर मीनिंग सोशलेबल माने सोशली अवेलेबल हबा माने सोशली तमे एक्टिव रहउछ लोक मानक सह मिसुछ कथा होछ ओके सो socially acceptable so gregarious and sociable are similar in meaning so 1 and 3 option number A okay option number A बुझिएला ऑप्शन नंबर ए क्विक्सोटिक माने कौन क्विक्सोटिक माने होची जदि क्विक्सोटिक पर्सन केमती होती जो मन को पाखे लाइक आइडियाज तांकर डिफरेंट था एंड अनयूजुअल था बट से गुड़ार लाइक किसी से माने सक्सीड करि पारंते नहीं तांकर थॉट प्रोसेस ओके किसी फायदा हुए नहीं बुझिएला एंड डिसर्नेबल रो मीनिंग कौन डिसर्नेबल माने होची तमे गोटे जिनस को इजीली परसीव करि पारछो ओके माने रिकॉग्नाइज करि पारछो किंबा देखि पारछो क्लियरली देखि पारछो ओके बुझले दैट इज डिसर्नेबल ओके जमती कि दूररू तमे आइलैंड टाको इजीली देखि पारछो द आइलैंड इज इजीली डिसर्नेबल बुझिएला तो बुझिएला ओके सो विथ दैट वी आर डन दैट वाज माय टाइम आई होप सब बुझी हेछि एक्सप्लेनेशन बुझी हेछि सब क्वेश्चन रे ओके थैंक यू फॉर लिसनिंग जय जगन्नाथ Diligent Odia.